So here you can see this is a website undergroundworks.com. So this is a demo of a block. So you can see here this is the block number, right? Then there is a nonce. Nonce basically क्यों use करते हैं? तो it is used to set the difficulty. इसके थ्रू हम डिफिकल्टी लेवल सेट कर सकते हैं. तो उसकी अभी डिटेल में नहीं जा रहे. लेट अस से नॉन्स मैंने रखा है 5. इट कैन बी एनी न्यूमेरिक वैल्यू. ओके, नाउ सी, let's say some data is there. I have written high. So you can see there is a hash value that has been generated. Now this hash value is actually dependent on the data as well as the nonce value. Okay, if I do the slight changes, let's say I make this small I as the capital I. So you can see the whole hash value has been changed, right? So even with the slightest of the change in the data or the nonce value, you can see, like, if I change the nonce value also, let's say I make it as 6. So again the hash has been changed. So this hash is actually unique for a combination of nonce and as well as the data. That is why it is very difficult to modify. Now see how this hash is being used to create the blockchain. I'll go to this blockchain. So here you can see there are how many blocks? Total of 5 blocks. जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक होता है उसे हम बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक. So you can see here every block is having two parts. One is the previous means previous block का hash, and hash is the hash of the current block, right? यहाँ पे कुछ नॉन सेट कर देते हैं. लेट्स से 5 5 5. That is the random difficulty level. We can increase or decrease the difficulty during the proof of work. Now see, let's say I have written some data here. I have written A here. Here I have written B. Now see, once I have written this A, when there was no data, so there was a hash. So once I put A, I make the slightest of the changes in the data. What it will do, it will generate a hash value. Now this hash value would be contained in the next block also. You can see here in the second block, block number 2, the previous hash value is actually the hash of the first block. पहले ब्लॉक को हम बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक, राइट? इसी ब्लॉकचेन का जो फर्स्ट ब्लॉक होता है दैट इज नोन एज जेनेसिस ब्लॉक. ओके, नाउ लेट्स से I have put B. नाउ सी, इस ब्लॉक का अपना हैश क्या है? 75 ACC 08 BADF. नाउ इफ आई पुट B here, you can see this hash has changed, राइट? और इसका तो हैश चेंज हुआ ही है, साथ ही साथ जो नेक्स्ट वाला ब्लॉक है उसमें जो प्रीवियस हैश की वैल्यू है वो भी करेस्पॉन्डिंगली चेंज हो रही है. लेट्स से यहाँ पे आई हैव रिटन C. Here I have written, let's say, hello. Here I have written, let's say, hi. This is the last block. Okay. Now if anyone wants to make any changes in the, let's say, block number 2, अब इस B, small b की जगह let's say I am doing capital B. Now see, this slightest of the change have actually changed the whole blockchain, right? इसके जितने भी आगे की नोड्स थी वो सारी नोड्स के जो प्रीवियस हैश और अपने हैश थे वो सारे चेंज हो गए. Because how we are calculating the hash, that is a kind of combination of the previous hash, data and nonce. All of these are included. So if we are making the slightest of the change in this data, it will actually change everything. Now see, यहाँ पे इनिशियली क्या था? लेट्स से B है. अब इसका हैश यू कैन सी दिस, इसका अपना हैश, फिर नेक्स्ट वाले ब्लॉक का हैश. जैसे ही मैं इस ब्लॉक में चेंज करूंगा, जब मैं कैपिटल B बनाता हूं, यू कैन सी ऑल द वैल्यूज हैव बीन चेंज्ड, राइट? इसका अपना हैश तो चेंज हुआ है, उसके साथ साथ इस ब्लॉकचेन के अंदर सारे हैश चेंज हो गए. दैट इज व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू द टेम्परिंग in any of the data, right? Now obviously whenever it will make the change, so
डेफिनेटली ये जो चेंज है दिस वुड नॉट बी अप्रूव बाय एनी ऑफ द नोड. कोई भी माइनर इसे अप्रूव नहीं करेगा. व्हाई? बिकॉज they will come to know that yes this has been changed. और इवन जो हमारी जितनी भी ट्रांजेक्शन है उन सबकी कॉपी would be there with the every node in the block, right? These are kind of decentralized system. So uh, every node would have the same copy, right? That is why it is very difficult to actually change, to do any of the tampering. And you can see like from where the changes have been done. Okay. तो इसकी हेल्प से हम ट्रैक भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वी कैन दिस इज अ काइंड ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस वेयर द डेटा कैन बी स्टोर्ड in a secure manner, right? That would be also tampering proof. Hopefully आपको थोड़ा सा आइडिया